Hi everybody, I welcome you all to Seven's Diners cooking classes. I am your host and Chef Shikha. Quickly let me know if you all can hear me and see me. Abhi audio video clear hai guys? Now it is clear. Hi Shalini ji, hi Meenu, Maheshwari, hi Mercy, hi Kaisha Garg, hi Priya, hi Janki, hi Sunita Rajpal, hi Harit ma'am. I mean to Maheshwari. Guys, quickly you can add in your friends and family who would want to learn this recipe. Hi Dad's Bakery. So you can just add in your friends and family. Hi Kanika. So I would brief you a little about Black Forest and what a pudding is. Hi Pramila. So we will wait for another 2 minutes and then begin. Hi Sumitra Biswas. First of all, जिन्होंने मुझे follow नहीं किया Instagram पे, please guys follow. I am coming up with a lot of reels also, recipe reels, nice summer recipes. Hi Kamal Dolly ji. Hi Gauri Garg. So guys, quickly you can add in your friends and family. I think the WhatsApp group is full, but so the WhatsApp group is full. So whoever wants to join in, you can share this link and recipe card to them. Okay. Also guys, go and subscribe to my YouTube channel, because whenever I go live, even if you're not there on the WhatsApp group, you will get the update of my live workshop. Hi Sangeeta ji, how are you? So on Akshay Tritiya, what everybody is buying today? Give me some suggestions, because even I need to go and buy now. So what everybody is buying mainly? अच्छा क्या रहता है आज के दिन purchase करना? I'm noting down your request for the free workshops. I'm definitely noting them down, Rashna. I will come up with that. Hi Manisha, good afternoon. Today for Akshay Tritiya, what is everybody buying? क्या खरीदने वाले हो आप लोग? The best thing to buy is gold. Gold jewelry. और इसका कोई पर्टिकुलर टाइम भी है गोल्ड? Any particular time when one should buy that? Because somebody told me that morning is good for buying a matka, a ghada. I went and bought that. Be able to see this later. Yes, Deepti, you will be able to see this later. You can leave and you can watch this session later as well. Hi, good afternoon, Nitya Shri. Sangeeta Rajpal ji, gold खरीदना best है आज. Okay. Hi, Gurdeep Kaur. So I think it's already 12:07. So we'll wait for 1 or 2 minutes. More people are logging in. Guys, quickly share this link with your friends and family who would want to join in. ये लाइट बंद कर दूंगी, आँख में आ रही है. ये बंद करके ये चालू कर दो या वो वहाँ की चालू कर दो. बिल्कुल आँख में लग रही है. Janki, you are not able to hear me. Just check your internet connection, because our internet connection is perfect. It's excellent, and I think everybody else is able to hear. In the beginning there was a technical fault. It's working now. Perfect. Great. Okay. Yeah, Deepti. Bye. See the workshop later. So guys, I am sharing the link of the application for Seven's Diners. You all will have to download the application, and those who have it, great. Those who don't have the application, please download the application, because I'm going to send out some offers
like for workshops that you can buy on the application. I will be generating some discount coupons today, so you can just go and download the app. The link is given in the chat box, and I'm also going to share the link in the WhatsApp group. It's there on the chat box here itself, and also I'm sharing it on the WhatsApp group. I'm sharing the WhatsApp, the website and application link. Hi Payal ji, hi Suman Agrawal, hi Sandhya Naik. So guys, let's talk about the puddings first. What are the puddings? Puddings are any desserts that are made with milk, egg, sugar and flour and any flavorings. Okay, so these desserts necessarily they don't have any frosting or anything. Okay, what we are kind of making is a fusion. We are making a black forest pudding. That means there's a pudding and there are elements of the black forest cake into this. All right, now I will go at my pace. I'm going to explain it in detail, so जिसको जल्दी हो तो वो बाद में भी देख सकते हैं. So we are going to skip the eggs. We are making an eggless pudding, so we are going to use corn flour. All right, so I'm using corn flour instead of eggs. Now coming to the black forest cake. What are the special elements of the black forest cake? आप में से कई लोग बेकर हैं, तो मुझे बताइए black forest cake के special elements क्या हैं? What are the supposed special elements? Tell me quickly. So after this Q&A, we would be going to the recipe. Black forest cake में क्या क्या आता है? Cherries, okay. Cherry, chocolate, cherry क्या? Cherry everybody knows then. Yeah. Grated chocolate, cream, perfect. A chocolate sponge, that is your crust. And exactly. नहीं डार्क चॉकलेट मनीषा जी इसमें नेसेसरी नहीं है. In when you are making a black forest, you can also go for a milk chocolate. Rum, it's not rum. There is a brandy called Kirsch. Kirsch. Kirsch किससे बनती? Chocolate shavings. Perfect, Irene. So there's cream, there's a crust base, everything perfect. So I've got some really perfect answers from all of you. Now there is a brandy which is brewed by the cherries, the sour cherries. यानी कि कुछ ऐसी cherries होती हैं जो कि जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट में उगती हैं. So these are kind of wild cherries. So those cherries are used for the fermentation of a brandy which is called Kirsch. अब Kirsch से ये केक की सोकिंग होती है, स्पॉन्ज की सोकिंग होती है. हम यहाँ पे ब्रांडी यूज नहीं करने वाले हैं. या तो आप चेरीज का क्रश ले सकते हो जो मार्केट में आता है इस तरह से, नहीं तो मैं आपको भी सिखाऊंगी कि आप इसका कंपोट कैसे बना सकते हो, so that you can even avoid buying this bottle. All right. How about whipped cream? Yes, whipped cream जाएगी. Cream and whipped cream वही हो गया. When you talk about the cakes, तो जब आप cream बोलते हो तो केक के मामले में वो whipped cream ही होती है. Sugar syrup, cherry syrup to moisten the cake. Exactly, Irene. Cherry syrup हम यहाँ पे इंडिया में यूज करते हैं. Otherwise ट्रेडिशनल रेसिपी में चेरी की जो ब्रांडी है वो यूज होगी. चेरी लिक्योर बोलते हैं उसको, वो भी यूज होता है. कोको पाउडर भी आता है. ठीक है ना जानकी? दैट्स नाइस टू नो दैट यू कैन हियर मी.
ऑलराइट, चॉकलेट, शुगर सिरप, यस। तो आपको शुगर सिरप में नहीं, चेरी सिरप में अपने चॉकलेट ब्लैक फॉरेस्ट केक के स्पॉन्ज की सोकिंग करनी है। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है मेरा, दैट इज माय चॉकलेट केक। ये छोटा ग्लास का है जो तुम लाए थे सुबह। So I've taken a chocolate cake. Actually I baked the sponge और उसके ऊपर का जो हम रिमूव करते हैं, जो उसका टॉप रिमूव करते हैं, आई एम टेकिंग दैट। आप नॉर्मल कोई भी केक ले सकते हो स्पॉन्ज का, आपको उसको बस थोड़ा सा, either you have to break it into pieces or if you are taking, you know, if you're taking a tub, तो आप एक लेयर भी प्रॉपर बना सकते हैं। आई एम मेकिंग इन अ टाइनी डेजर्ट ग्लास। एक मैंने स्टेम ग्लास में भी बना के रखा है। कैमरा इज सो फार, ब्रिंग नियर इट। ओके, जस्ट वेट, थोड़ा सा वो जूम इन कर देगा। whipped cream के बिना नहीं बनेगा ये black forest pudding. Okay, you will not be able to make it without the whipped cream. So just get the whipped cream from the market, no, and then make the pudding. Can you zoom in a little bit? नहीं होएगा? Try. अच्छा, this is the maximum. So I cannot zoom in too much. Whatever ingredient you want me to send the picture, I will send you the picture for it. All right? So my very first layer will be with the cake crumble, the sponge crumble. I'm going to press it down with a spoon. For this you can even, like, you know, if you're using a tub, a dessert tub you're using, you can put proper cake slices, but don't make very thick slices because this is going to be a pudding. We want the pudding taste to be very prominent. All right? Now my compote is yet to be made. Any particular quantity? See, you have to put a thin layer. ज़्यादा मोटी layer नहीं. See, I'll just try to bring it as closer to the camera as I can. This is a thin layer that I'm making. See, ज़्यादा केकी नहीं होनी चाहिए हमारी ये dessert. It is more of a pudding based dessert. अब मैं थोड़ा सा इस पे क्रश डालूंगी, ये वाला। आप घर पे क्रश जो बनाएंगे आप वो डालेंगे। मैं वो अभी मेरा बना नहीं है, बनाएंगे हम अभी, तो मैं अभी इसको जस्ट लेयर करके थोड़ा सा रख देती हूँ ताकि ये केक जो है ना, स्पॉन्ज जो है, ये इसको थोड़ा एब्जॉर्ब कर ले। अभी फ्रेश चेरीज आ नहीं रही है मार्केट में। We are only getting candied cherries, the Karonda cherries. These are the ones. White plate. Can you on the caption option, please? I have hearing difficulty. Oh, let me just figure out. The caption option comes only when you put the recording. I have to figure out if it comes in the live as well. Chocolate cocoa powder, cream, ganache, cherries. Yeah. I've used the Mala's Cherry Crush. Mala's Cherry Crush. Okay, this is your Mala Cherry Crush. I've got it a little closer to the camera. Otherwise, I'm going to send a picture. I'll click a picture and send it. Tinned cherries भी आप use कर सकते हो। ये मैंने जो dried candied cherries आती हैं वो ली हैं, जो sugar syrup के अंदर इनको पहले dehydrate करके sugar syrup में डालते हैं, ये वो वाली है। तो थोड़ी सी मैं इधर डाल रही हूं।
and make sure you put it next to the wall of your glass or of the tub that you're using. आपको ये वॉल के पास लगाना है ताकि ये साइड से दिखे. अभी हम अपना पुडिंग कुक कर लेते हैं. इसको थोड़ी देर में साइड रख रही हूँ ताकि मेरा केक जो है वो थोड़ा एब्जॉर्ब कर ले क्रश को. In a pan, you have to take heavy cream और medium cream और heavy cream, आपको जो भी available हो. ये मैंने अमूल क्रीम डाली है, अमूल फ्रेश क्रीम ब्लू टेट्रा पैक. छोटा वाला ब्लैक डिस्क, ऐसा छोटा वाला बस स्पैचुला. So this is the cream that I have used. Okay, yeah, that is Cherry Crush by Mala's. Today my technical person is not he's not come, my photographer, so I might just skip a few messages, otherwise वो मुझे बोल के भी बता देते हैं. So if I happen to skip any of the messages, please आप मुझे बाद में जरूर बता देना, so that I can answer your queries. रख दे. A cup of full fat milk, unsweetened cocoa powder. I am using this Van Houten cocoa powder. जो लोग मेरी क्लासेस रेगुलर करते हैं, they know that I am using this only. Most of the time I use this only. Van Houten Professional. This is a medium brown. आप Hershey's का भी डाल सकते हो, आप Cadbury भी डाल सकते हो. I'm making half the quantity. Cornstarch, cream अंदर ये क्रश की बॉटल में. Yes, the recipe card has half cup of medium or heavy cream. I am using Amul cream, that's a medium cream. अब आप इसमें शुगर या जैगरी में से कुछ भी डाल सकते हो. Vanilla extract. I'm using Sprig vanilla extract. अब जो मेरी डार्क चॉकलेट चॉप्ड है, ये मैं अभी नहीं डाल रही हूँ, मैं बाद में डालूंगी ये. यू हैव टू वेट बिफोर यू कैन पुट दिस. ये उठा लो यहाँ से. गरम करने से पहले एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे. Now a lot of puddings are made with gelatin or agar agar. We are not using that.
Okay. So if you want to even make it healthier, you can use arrowroot or राइस फ्लावर इनटू दिस, बिकॉज राइस फ्लावर से भी पुडिंग्स बनती हैं और बहुत अच्छी सेट होती हैं. इफ यू पुटिंग इट इन अ स्टॉल, तो देखो ये तो आपको रेफ्रिजरेट करनी है और इसकी शेल्फ लाइफ एनीवे फ्रॉम 2 to 3 days है. अगर आप स्टॉल में रख रहे हो, बाहर बिल्कुल मत रखना. मेक श्योर दैट यू पुट इट इन अ रेफ्रिजरेटर. मैक्सिमम लम्प्स को ब्रेक करने के बाद में हम इसको फ्लेम पे रख देंगे. Guys, quickly add in your friends and family. Let them also learn the recipe. कोको पाउडर उठाएं, शुगर का भी काम होगी. नहीं, शुगर चाहिए पड़ेगी. Yes, perfect. You can do this. See, if you don't take the other elements, you're not taking other elements. We are making a combination. Like this is a black forest pudding. So there are elements of black forest cake. There are elements of a chocolate pudding. If you want to make a simple chocolate pudding, only this can be set in a ring mold, or even in a ramekin you can set this. Okay. Same quantity of arrowroot powder or rice flour. No change. Let this come to a simmer. I can still feel some lumps in this of cocoa and even of corn flour. So I am now going to take my whisk, क्योंकि हमको कोशिश करनी है मैक्सिमम इसमें से हम lumps को जो है वो मेल्ट कर दें, इरेडिकेट कर दें. और अगर आपको फिर भी लम्प ज्यादा लगेंगे ना, यू कैन इवन स्ट्रेन दिस, छानो दिस मिक्सचर. नाउ यू कैन सी दैट दिस हैज स्टार्टेड टू सिमर. मेरा कस्टर्ड अभी ये बनना स्टार्ट हो गया. आई एम नाउ गोइंग टू ऐड इन द डार्क चॉकलेट. You could even make a chocolate orange pudding. You can make a chocolate strawberry flavor pudding by adding some flavors to this. तो आपने एसेंस डाला तो आपका चॉकलेट ऑरेंज बन जाएगा. स्ट्रॉबेरी एसेंस डाला तो आपका चॉकलेट स्ट्रॉबेरी बन जाएगा. मिंट डाल सकते हो, कोकोनट डाल सकते हो. अवन में कर सकते हैं. अवन में क्या करना है, ये पुडिंग को नो, यू हैव टू कुक इट ऑन द गैस फ्लेम. प्रिया, आप सेम क्वांटिटी लेंगे एरोरूट की और राइस फ्लावर की, सेम क्वांटिटी लेंगे एज कॉर्नफ्लावर. सो यू कैन सी अ लम्प फ्री कस्टर्ड इज रेडी. लम्प फ्री पुडिंग इसकी जब ये सेट हो जाएगा तो पुडिंग बनेगी. राइट नाउ इट्स कॉल्ड अ कस्टर्ड. ये एकदम लम्प फ्री है, बट जस्ट टू बी डबल श्योर इसको हम एक बार स्ट्रेन कर देते हैं. एंड इन द प्रोसेस ये थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा. कप मेजर दैट आई एम यूजिंग इज 250. आई यूज 250. ये स्ट्रेनिंग इतनी नेसेसरी नहीं है, but I'm just doing it so that just to be double sure.
नन ऑफ द लम्प्स आर लेफ्ट. मैंने विस्क लगाया तो लम्प्स सब जो है वो घुल गए थे. बट जस्ट एक मेरे को ये भी है कि ये ठंडा भी हो जाएगा जितनी देर में मैं इसको छानूंगी. छोटे छोटे लम्प्स फिर भी आए, देखो निकल आए. यहां तक कोई क्वेश्चंस? मैं थोड़ा सा इसको कूल डाउन कर रही हूँ. कुछ भी क्वेश्चंस है तो यू कैन आस्क. पानी दे दो. कॉर्नफ्लावर यूज किया मैंने शिल्पा. Okay, like that you make the mango pudding. Okay. How much cake to go with full recipe? See, we're making a pudding. See, it'll always depend, Gauri, on the size of the glasses that you're using. अब मैंने एक छोटा अभी बना रही हूँ मैं क्लास में. एक मैंने टॉल ग्लास में बना के रखा है, मैं दिखाती हूँ वो. ओके, सो दैट्स माय टॉल ग्लास. इसके अंदर मैंने बना के रखा है. तो हर एक में अलग क्वांटिटीज आती है. यू रियली कैन नॉट जनरलाइज कि इसमें कितना बनेगा. माय पॉइंट इज यू हैव टू टेक लेस स्पॉन्ज. टेक as less layer of sponge as you can, because when you're making a pudding you want more of the pudding layer than your sponge layer. ठीक है ना? It's not a cake, we are making a pudding, so just to give it that Black Forest feel we are putting a bit of a sponge in between. All right, स्पॉन्ज की अगर आप देखो तो आई हैव नॉट गिवन यू द क्वांटिटी. दिस क्वांटिटी ऑफ द पुडिंग शुड बी सफिशिएंट फॉर 4 ग्लासेस. 4 ग्लासेस ऑफ अप्रोक्सीमेटली, अगर आप पूरी पुडिंग का आप अपना सेट देखते हो, ग्लास का पूरे ग्लास की क्वांटिटी देखते हो, इफ दैट इज अप्रोक्सीमेटली 250 ml, you should be able to make 4 to 5 glasses with this. Okay, with this pudding quantity आपके 4 से 5 ग्लास बन जाएंगे. गौरी, again I will say that you will have to check and customize. आपको ये चीज आपके अकॉर्डिंग लेनी पड़ेगी कि आप कौन सी साइज का वो ले रहे हो. और see, this recipe is a very customized kind of a recipe. मुझे ज्यादा पुडिंग पसंद है, मैं पुडिंग डालूंगी. मुझे ज्यादा लेयर क्रीम की पसंद है, मैं क्रीम डालूंगी. केक कम रखना है, बाकी कंपोट, क्रश, पुडिंग, क्रीम, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज करोगे. ओके, डोंट गो बाय माय फिक्स्ड रेसिपी इनटू दिस. आई वुड सजेस्ट मेक वंस, मेजर इट, सी व्हाट एलिमेंट यू लाइक द बेस्ट अकॉर्डिंग टू द टेस्ट. आपके कस्टमर्स को कौन सा एलिमेंट पसंद आ रहा है, आपको कौन सा पसंद आ रहा है, आप उसको ज्यादा क्वांटिटी में रखो. ठीक है ना? उसको आप मैक्सिमम लेयर भरो अपने ग्लास में. Now this is a little cool. I'm going to pour it into my glass. I've just filled it approximately close to being half. मेरे पास में ये थोड़ा बच गया है. आई एम जस्ट पुटिंग इट इनटू द अदर ग्लास जो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है. मैं इसमें एक और लेयर कर रही हूँ.
You want the pudding to be darker, you will add more cocoa. Okay? और आपको अगर इसमें शुगर कम लगे तो आप शुगर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं. आप इसको पूरा रूम टेम्परेचर पे लाओगे, उसके बाद में आप इसको रेफ्रिजरेट करोगे. मैं अभी लाइव क्लास में इंस्टेंटली रेफ्रिजरेट करने रख रही हूँ बिकॉज लेयर सेट हो जाए तो अच्छा है. ये रख दे. अच्छा, इफ यू यूजिंग जैगरी देन आई वुड सजेस्ट थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा देना शुगर से, क्योंकि जैगरी जो ऑर्गेनिक जैगरी पाउडर आता है उसकी स्वीटनेस चीनी से कम होती है, तो आपको थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ानी पड़े. मे बी 2 tablespoon more of jaggery. If you compare it as a ratio to sugar, 2 extra tablespoons of jaggery should be sufficient. ग्लास को भी रखते हैं अभी, फॉर द टाइम बीइंग अंदर रखते हैं. I'm just tapping it down so that the surface becomes even. ये फ्रिज में taking a pan. Yeah, this is going to be on YouTube. Yes. Now coming to the cherry compote, third element, cherry compote. I don't have fresh cherries. They are not available anywhere. See, if you're taking fresh cherries, you can, just cut them into half and put them. But since I'm using the dried ones, so they're a little hard. So I've just chopped them like this in the chopper, and I'm adding it. Should be sufficient. अभी लेके मुझे sugar I will add little because already the cherries are candied. That means इसमें already मीठा है, चीनी डली हुई है. मैंने ये वाली चेरीज यूज की है जो कैंडीड चेरीज आती है. ये आपको सब केक सप्लाई शॉप पे मिल जाएंगी, सुपरमार्केट्स में भी मिल जाती है, इवन ये जो मुखवास वगैरह बेचते हैं ना वो शॉप पे भी मिल जाती है. फर्स्ट आई एडेड वाटर, देन आई एडेड सम चॉप्ड चेरीज. These cherries I have chopped and sugar. I have not yet added the lemon juice and the lemon zest. That will come in the end. Towards the end, I am going to add the lemon zest and lemon juice. So coming week, my sessions are a mango sandesh. That's again a free session, and I'm also coming up with a tacos workshop.
After that, we have a healthy crackers workshop. That's a very, very good menu. I will be sharing that with you, all the details. And there were a lot of requests for bagels, so I'm doing a bagels workshop as well. Since these are very hard, these cherries, so the compote would be a little, you might have to cook it a little longer. और जो tenderness fresh fruit में आती है upon cooking with water, वो इसमें इतनी नहीं आएगी, इतनी और इतनी जल्दी भी नहीं आएगी. But just because I could not get fresh cherries, I thought I'll demonstrate with these cherries. When you get the fresh cherries in the market, आप same recipe fresh cherry के साथ में बना लेना. How much cherries I've written, all the quantities are given, all the quantities are there. Okay. Healthy breads, definitely. I'm coming up with a gluten-free breads or a millet bread workshop also. In May, that would be there. नींबू नहीं छोड़ने वाला. Breads are coming, salads are coming, Buddha bowl is coming up. Then we are also coming up with the Punjabi gravies 2.0. अभी मैं ये गैस फ्लेम बंद कर रही हूँ and I'm just going to grate the zest of half a lemon into this. Lemon juice. One pot healthy meals. Oh, definitely, definitely. I'll do the one pot healthy meals. That will cover a lot of recipes from different cuisines. From different cuisine, what are the quickest and healthiest, dishes we can make. I'll take it out of the pan and put it under the fan for some time, like 2 to 3 minutes to let it cool completely. Because इसके ऊपर जो लेयर आएगी वो क्रीम की आएगी. क्रीम को कभी भी हम गरम गनाश, गरम पुडिंग, गरम कंपोत के ऊपर नहीं डालेंगे. Whipped cream पूरी हमारी पिघल जाएगी वरना. I'm going to put this for cooling down. इसको ठंडा करने 2 मिनट इसी के नीचे ठंडा कर दें. Now that is my cream that I've whipped. Mango cherry, okay. So guys,
taken this rich whipped topping gold cream. The non-dairy whipping cream I've taken. You can take the dairy as well. I'm more comfortable with this thing, so I'm using this. It's a Riches whipped topping gold cream, whipping cream. Okay, and I've given the quantity. You just need to whip it till you achieve medium to stiff peaks. Cake बना रही होती तो मैं stiff peaks लेती, but it's a pudding. I need a soft mouth feel. For that matter, you have to whip it only till you achieve medium to stiff peaks. यानी peaks आ गई हैं, हल्की से stiff है, but then they are falling down. Starters on a charcuterie platter. Definitely, संगीता जी, वो तो आपने बोला था एक बार पहले भी, मैं भूल गई थी. I think आपने cheese platter के टाइम पे बोला था. I'm definitely coming up with those kind of workshops. I want to learn multi-seed cookie recipe. Multi-seed cracker आ रहे हैं ना अभी, thin and crispy. पूजा, Nupur, the brand of this is Riches, R-I-C-H-S, Riches. Okay. Nupur, you are there on the group. I will just share the picture of this particular bottle, the Tetra. ये मैंने इलेक्ट्रिक बीटर से किया है, तो you can see the peaks are there, but they're just, you know, falling a little bit. They're not as stiff as you would want for your frostings. See, icing से थोड़ा सा कम हो गया. तो कोई स्टीक करना है. A layer of your cherry compote or cherry crush. If you're using a store-bought cherry crush, that is also perfectly all right. Guys, you need to download the Sevens Academy app. On the application, I will be generating some discount coupons. So whichever workshop, because every week you request me for discount on particular workshops, but I try to give discount on some related workshops only for, you know, 24 hours or 48 hours or maybe a couple of hours. But now there are a wide variety of workshops from which you can choose from. So just download the application. I am re-sharing the link on the WhatsApp group, and you can download the application, and we will be generating some discount coupons for you. Okay. You're there, no? So I will just share the picture of all the products that I've used. Yeah, I soaked the cake base in some of the cherry crush. Cherry crush से मैंने soak किया था ऋतु जी, बहुत हल्का सा डाला था. Just put the application link in the chat box, please. Guys, those of you who are not following me on Instagram, please go and follow. And also download the application.
छीलने मिला सबसे छीलने मिला चल So I've taken the whipped cream in a piping bag. चुप करो तुम मैं मिल्क चॉकलेट का एक पीस ले रही हूँ और एक पीलर लेना है आपको, वेजिटेबल पीलर. That's how you put your chocolate shavings on top of this. ये नहीं, चौड़े बना I've taken milk chocolate, not dark chocolate on this. And just your candied cherries or fresh cherries on the top. You need to chill this for a good 2 to 3 hours in the refrigerator before you serve it. Okay? इस पुडिंग में क्या क्या वेरिएशंस कर सकते हैं. देखो आप प्लेन चॉकलेट पुडिंग बना लो. अभी मैंने ब्लैक फॉरेस्ट केक के साथ बनाई है. आप कोई भी जो भी केक फ्लेवर्स बनाते हो उसके साथ में पुडिंग बना सकते हो. ठीक है, ये सब चॉकलेट्स हटा यहाँ से. ठीक है, you can use dairy milk. Yeah, just make sure that you have just put it in the refrigerator. It should be hard only, then you will be able to grate it. ठीक है, any other option apart from cream? सुनीता जी, ब्लैक फॉरेस्ट केक में क्रीम आएगी ही आएगी. Yeah, it is delicious. It is delicious. It's a very much. It is a loved recipe. I'm going to take the pictures and send across to you. Even the product pictures I will be sharing with you all. So guys, please download the application. I'm going to generate some discount coupons on any classes of your choice that you want to buy. Not this time, not my choice of classes that I'm offering, but any workshops of your choice you want to join in. I'm giving a good 20 to 30% discount on the application. Quickly go and log in. Download the app and log in. I'm going to generate some coupons. Yeah, it is beautiful. Thank you, Nupur. Thank you so much. Thank you, Smita ji. Thank you, Shalini ji. You're most welcome, Manisha ma'am. I hope you had a good time learning with me as much as I had while teaching. So any other requests you have for the recipes, you can let me know. I will include them in my weekly sessions that we are doing for our students, because there's so many recipes that cannot be covered in the paid classes.
we are coming up with these free sessions, that those small recipes, those recipes which are not a part of our paid workshops, they can also, be because I don't want you all to waste material seeing 10 recipes on YouTube. सामने रियल टाइम जो चीज बनती है ना, उसमें आपको पता चल जाता है कि क्या चीज कैसे बनने वाली है और इसमें क्या क्या चीजें गलतियां हो भी सकती हैं. I'll be sharing the pictures with you guys. There are any questions, let me know. Thank you, Dad's Bakery. The price you need to calculate on your own, because all the materials and all you have to calculate. आप क्या weight का बना रहे हैं, आपका glass का क्या cost है. आप अब now suppose you're using imported cherries, वो बहुत costly हैं. So according to your ingredient cost, you are going to calculate the cost, the selling price on your own. Thank you, Sumangala. Thank you everybody for joining in. Can we use tinned cherries? Yes, वैशाली जी, मैंने ये candied cherries use किया. आप tinned भी use कर सकते हो. Those are softer. You can use them. उसका कंपोट भी बहुत अच्छा बनेगा. मेरे पास ये वाली चेरीज मोस्ट ऑफ द टाइम होती हैं और ये ब्लैक फॉरेस्ट में ये लगती हैं, इसलिए मैंने ये ले लिया. बट ऑनेस्टली द कंपोट कम्स बेटर विद टिन्ड चेरीज और फ्रेश चेरीज. दीज आर हार्डर, दीज आर मच हार्डर. तो बन तो जाता है इससे, बट बेटर उससे बनेगा. थैंक यू सुनीता जी. सो गाइज, quickly download the application. We are going to give the generate the coupons today. So whoever wants to buy workshops can avail a good 20 to 30% discount. Thank you everybody for joining in, and please make them. They are very easy. They are very easy, and just make them. Click pictures, tag me on Instagram, follow me on Instagram, guys. That's छोटा मांग रही हूँ आपसे. You just have to go and click a follow button. That's it. Thank you Sumangala. Thank you Alka ji. So it was good to have you all. Yeah, video is going to be there on YouTube. Video is there, just scroll back and see. Okay, next class is going to be a mango sandesh. I might just plan a workshop before that also, because बहुत सारी request हैं. एक vegetable jalfrezi की भी request आई थी, तो I might just do it on Monday or Tuesday. Maybe Tuesday I could be doing 25th. I could be doing a jalfrezi. Then we will do a workshop on 27th, and then we have on 29th a tacos class. So at least 2 to 3 free sessions again I'm coming up with in the next week. Then there is a paid workshop of healthy baked crackers. तो उसमें भी जो initial early bird discount होगा, तो तब enroll कर लेना. Don't get late for that also. लवाश की वीडियो आप प्लीज नंदिनी को बोलो. She has that link. It is not on my Instagram. You can ask her for it. You will make the burger today, Gauri. Do let me know how it comes out. My children have loved it. So donuts definitely I'll teach. I'll come up with that workshop. अभी तो कुल्फी का भी किसी ने रिक्वेस्ट लिखा था ना इधर, नहीं तो लास्ट वर्कशॉप में लिखा था कुल्फी का, और पायल जी ने जालफ्रेजी का कहा था. Thank you Sangeeta ji. And today I think, what was the request today? I'll just go through the group and I'll note down your request. Thank you everybody for joining in. You have been a lovely audience. Please save my number, because I'll be sending you updates also. Diet recipes, yes Sangeeta ji, but I need some diet recipes. I need to cook, because if I'll teach, I'll cook and I'll eat that only. So bye everyone, take care, have a nice weekend. See you in the next workshop. ये ना उधर ले आ ग्लासेस.